तो मुझे तो पता नहीं क्या करना है, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। ओके, गेम लोड हो गया। कहाँ जाना है? ओके, बात सब सही आ रही होगी। चेक कर लेते, एक मिनट। ओके, सही तो चल रही है स्ट्रीम। ओके, इससे बात करनी है। One trusts you have met Shen-He. So, are you getting along quite well? So far so good, yeah! So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All Hello, the Adepti bro. living today are कैसे हो आप? acquainted with Shen-He to some बहुत दिनों degree. बाद गेंशी खेल रहा हूँ मैं भी। Cool! So, अभी जस्ट what's विनीत से her बात हुई थी। Adeptus विनीत name बोला कॉलेज में anyway? हूँ अभी। Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shen-He have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shen-He is human. क्वालिटी सही आ रही है, चलो अच्छी बात है। Oh, right. Wait, what? फाइनली गेंशी स्ट्रीम। क्या है बताओ। बीच में कुछ महीनों के लिए मैं गाँव गया था, फिर तो मैंने छोड़ दिया था गेंशी। फिर उसके बाद वो फेरी उसने बोला कि मुझे गेंशी खेलना है, तो फिर थोड़ा भी माहौल चल रहा है गेंशी का, तो कर लिया स्ट्रीम। What? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shen-He by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shen-He, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. ये क्या है? द साउंड बिफोर यू क्लाउड रिटेनर विल बी पेएबल कैरेक्टर अराउंड 4.4 वर्जन। सही है। That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent.
She then passed out without uttering a single word. साउंड सही आ रही है ना, गेम साउंड और मेरी साउंड, मतलब पहले की तरह नहीं हो रही ना ये, मतलब एक साइड आवाज आ रही है एक साइड नहीं आ रही है। कोई बताएगा? सब सही है? और पता नहीं स्ट्रीम कितनी डिले, ये भी नहीं पता मुझे, मैंने 2 सेकंड रखी है। In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhe might have... Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shenhe may have still emerged the victor of the confrontation. सब सही है बट डिले है। हाँ वो डिले ऐप के थ्रू आता है, मतलब उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब 0 डिले करने जाता हूँ फिर भी वो नॉर्मली 5 सेकंड का डिले देते ही है वो नॉर्मली, उसका कोई ये नहीं है मेरे पास सोल्यूशन। That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind, and she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shenhe has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. फेरी गेमिंग ऑफिशियल हुई, वो आ गई तो मैसेज देखती ही नहीं है भाई ये नुबड़ी। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, ये जो लड़की का नाम मेरे को पता है, मेरे को मतलब बताया था यार, फिर भी मेरे को ये नाम लेते नहीं आ रहा। ये स्नेह, क्या स्नेह ही नाम है ये, ऐसे कुछ नाम है ना? अरे यार क्या प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है यार। स्नेह मतलब मतलब मन में बोल पाता हूँ, मुझसे निकलती क्यों नहीं है ये वर्ड। स्नेहा, स्नेहा ऐसा कोई नाम है ना? स्नेहा, स्नेहा। ये क्या लिख रही है? यही मीको, क्या मीको? हो जा यार, याद हो जा। से मैं बोल नहीं पाता यार, दिक्कत हो है, क्या ही बताऊं मैं, दुख दर्द पीड़ा। It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shenhe's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given फिर भी you, बोल नहीं पा रहा हूँ। and take good care of her. मैं आ सकती हूँ सर्वर में क्या?
नहीं भाई, तू नहीं आ सकती, तेरा भी 21 लेवल है, ठीक है? लेवल अप कर तू पहले। Oh, now Paimon gets it. You came out here to check up on Shenhua because you were worried about her, didn't you? हाँ, और फेरी सुन, अगर तेरे को कोई भी कैरेक्टर के बारे में पूछना है ना, इससे पूछ ले, विनीत के कजन से। ये तुझे बताएगा बेस्ट कैरेक्टर, मतलब कौन सा कैरेक्टर लेना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए। फेरी समझ रही ना बात? इनको पता है, मतलब हर कैरेक्टर के बारे में पता है, कौन सा कैरेक्टर अच्छा है, कौन सा कैरेक्टर मतलब यूज है, किसका नहीं है, मतलब सब बता देंगे तुझे। जो भी क्वेश्चन पूछना है इनसे पूछ ले, ये बता देंगे तुझे, ठीक है? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. अरे यार, ये चैट्स के बीच में ये हार्ट वाला कहाँ से सिंबल दे दिया भाई? चैट भी नहीं पढ़ पाते ठीक से। क्या लिखा है? ऑन गोइंग गेम दिस ईयर बट विन। हाँ, होंकाई जीती ना, बता रहा था विनीत मुझे। इसको बता दो, इसको बेस्ट कैरेक्टर कौन से मतलब है, मतलब इसको कैरेक्टर लेने पर इसको पता नहीं कौन सा कैरेक्टर लूँ और कौन से कैरेक्टर ना लूँ। ये बिना बात के स्पिन किए जा रही है। थोड़ा इसको ध्यान दे दो, ये फेरी को। If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Best Mobile Game Award goes to Honkai Star Rail. Can't believe it. सही बात है, गेम तो अच्छी है वो, अभी भी है। Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. और वो गेम जीतने की वजह से ना बहुत सारे ये भी मिले अपने को, प्रीमो जेम्स, बहुत सारे। क्या बोल रही है? अरे मेरे को बताओ पहले, बाद में तारीफ कर लेना। क्या पूछ रही तू? बेस्ट पावरफुल कैरेक्टर गर्ल में कौन सी है? इट इज गुड बट नॉट एवरीवन कैन एंजॉय इट। इट्स टर्न बेस्ट। क्या बेस्ट गेम? बेस्ट नहीं, मतलब बेस्ट डी वाला। भाई मेरा टी और डी का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या चल रहा है ये? बेस्ट, हाँ ऐसा गेम। हाँ तो इसको जवाब दे दो ना ये फेरी को। ये फेरी क्या पूछ रही है? इसको एक फीमेल कैरेक्टर चाहिए जो बहुत अच्छी हो। उसका नाम बता दो उसको। नेक्स्ट बैनर में राय शोगन है no सेकंड। wonder she doesn't like being treated as an adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। देख ले फेरी, पढ़ ले। वेट अंटिल फॉलिंग टेल। ये 4.3 I am also saving primo gems to get her। मैंने पता है सेविंग के नाम पे 10,000 प्रीमो जेम्स मतलब सेव करके रखे हैं। ऑलमोस्ट 10,000 है मेरे पास। Hey, so Shenhua, क्या बोले
इसने शेन हाँ ऐसा कुछ बोला है। Master has relayed my situation to you, I take it. क्या लिख रही है लू? ये क्या लिखी है तूने? वही Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, लक कितना but I चाहिए? didn't hear you 80 come ना, in. शायद से 80 लक होता है इसमें। जैसे फ्री फायर में नहीं होता अपना 100 लक पे मिल जाता है गारंटेड, वैसा ही उसके बीच में भी मिल सकता है बट 80 तक रहते हैं। I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. 90 pulls is max to get a character। मतलब बढ़ा दिया यार, ये लोग बढ़ाते जा रहे, गलत बात है। इतने After कहाँ से all, लाएंगे हम लोग? master is very talkative. कॉलेज करूँ भाई, कलेक्ट करूँ लिखा है यार। स्टार क्यों कलेक्ट करने हैं तुझे? देखो प्रीमो जेम्स नाम है उसका, समझ रही है? तुझे वो अगर चाहिए तो कर ले, 10-12 हज़ार कर ले। Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. एक ही कैरेक्टर पूछ रही, कि और भी कैरेक्टर पूछ लेना। नॉट you'll pass to another character, Saint of your banner, to do more pulls, but you will be guaranteed this time 17 likes already। wow, थैंक यू गाइस 70 लाइक्स करने के लिए। चलो जल्दी से 20 लाइक कर दो। अपडेट कब आ रहा है? अपडेट 7-8 दिनों में। मुझे भी एक कैरेक्टर लेना तो है। It's okay. I don't mind. मुझे भी एक कैरेक्टर लेना है। मुझे एक कौन सी कैरेक्टर लेनी है? हीलिंग कैरेक्टर लेनी है मुझे, एक अच्छी कोई The हीलिंग fault is mine कैरेक्टर। for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. No lowly character in 4.3, so go for Raiden. Totally worth it. Great! Well, I now will that we're back all rested up, we for should 20 start minutes searching for the wait other for 2 me. items on the list. But before we do that, let's go to the building site and पक्का ask अपडेट Ningguang's के little बाद helper how the आएगा progress is राइडन going. शोगन। हाँ भाई, इनको ही पता After भाई, all, मेरे को नहीं पता। ठीक है, Sunset Vermilionite is so मैंने देखा rare. अपडेट्स की क्या आने वाला Paimon है, doubts क्या many नहीं। competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. यार पीसी काम क्यों नहीं कर रहा? Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it. They're so good. I ये concur. गेंशी It has a rich Genshin flavor, has far announced more its agreeable than officially. those I've cooked for myself in the wilderness in the past. वही मिशन कंप्लीट हो गया मेरा। अरे वो वाला मिशन कहाँ गया?
यही है ना शायद से, हाँ यही है। ऊपर so guaranteed that Raiden will be in 4.3. तो मुझे कितने स्टार जमा करने होंगे? It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. Story is quite sad. इसकी स्टोरी सैड है। And she's been handling it alone all along. The Qixing secretary clearly isn't an ordinary person. It's so frustrating. मैंने अभी तक फाइट नहीं की ना राइडन शोगन से, मतलब वो याद है पिछली बार करने वाले थे फाइट बट हुआ नहीं था। याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ तो हुआ था। Huh? You're... Aren't you Ningguang's servants? How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. निंगवांग। Have you seen Miss Ganyu, traveler? Ganyu. It has been several days since Ganyu left for Joyun Karst. She's the general secretary of the Liyue Qixing. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Even though the Qixing have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Julian Karst and bring the Adepti the latest news about the crisis. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. You have to complete an anti-Raiden training that Miko give us. उसका मैंने मिशन नहीं किया है मतलब। Is that so? तो मैंने ये कौन सा मिशन स्टार्ट कर Maybe दिया? Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Miss Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. मुझे जो सबसे ऊपर दिखा मैंने वो वाला मिशन स्टार्ट कर दिया आज, क्योंकि मुझे याद ही नहीं था पिछला कि मैं कहाँ पे था। Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. किसी चलने की आवाज आ रही किसी की तो। She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. You like this, it about you. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment. We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Speaking of Julian Karst, traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times! Ah, that's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there.
It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Okay. Sea of So Clouds Ganyu start left हो to गया. visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mel outside? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Oceans क्या क्या थे? तो ये भी यहीं क्या है, ये भी यहीं का है. सी ऑफ क्लाउड ही तो दिख रहे, बाकी और कौन सा है? नॉन स्टैप. इसका तो डेली मिशन से इन सब में थे कौन से वो मिशंस? टॉप आर कॉन्क्वेस्ट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. टॉप ये इसके बाद यही करते, फिर ये पहले कंप्लीट करते हैं. कहाँ जाना है? ये क्या आ गया? ये था पहले से? नहीं नहीं था ये तो पहले. नहीं यार ये नहीं था. अरे पूजा. Rain, if only you could cleanse the corrupt souls of this world. यहाँ पे चढ़ना है, यहाँ पे. It's part of story, no worries. Okay. मैंने ग्राफिक्स में कुछ छेड़छाड़ की. बारिश नहीं दिख रही मुझे, मतलब बूंदे नहीं दिख रही. Chamber is floating into the sky. But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Bywin! And hey, Beto! And hey, person Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Beto, you're joining the Jade Chamber contest too? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler, both good buddies of mine. And this is... sorry, not sure we've met. Shenhe. I am there. Friend.
Shinha, you remember Niguan? Good to meet you. A friend of a friend is my friend too. Or, as I like to say, a mate of a crewmate is part of the crew. Miss Yoon is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the three of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help her win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? I think I see where you're going with this, Miss Yoon. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it, the other 2 can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. From what I've heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. Is the most I'm gonna take off. See you later. Okay, let's go! David. By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. उसका मतलब Genshin होता है, ठीक है. मुझे नहीं पता था. Ningguang यार कैरेक्टर्स यही है ना ये. हाँ यही तो है Ningguang. और नए कैरेक्टर मुझे कौन से मिले मैं दिखा देता हूँ. एक ये है, एक ये मिली है, ये तो पहले ही मिला था. ये उस दिन मिशन किया था मैंने वाटर के अंदर वाला, तो मिला ये. ये सब तो याद नहीं है. ये भी एक है. ये सब तो स्ट्रीम में ही मिले थे. हाँ ये ले लिया मैंने एक. Benny's adventure team, assemble! In Genshin, the world is called Yachayar and not Earth. ओके मैंने ये कैरेक्टर लिया है 34 टोकन देके शॉप में से. Where did that come from? सही किया ना. मतलब इसको कुछ किया तो नहीं है अभी तक, बस लेके रखा है मैंने.
I still have a lot to do at the guild. बाद How में about बता you देना take a उसका rest while I मतलब go back? आर्टिफैक्ट्स और वो सब कौन से देने अच्छे रहेंगे उसके लिए सजेशंस। बेनिथ बेस्ट पायरो कैरेक्टर, इसमें मैंने कुछ अटैच नहीं किया है। क्या आ गया ये रहा, इसको कोई आर्टिफैक्ट वो सब कुछ नहीं दिया अभी। सिर्फ विनीत को बताया था ये कैरेक्टर है, मेरे पास टोकन भी है, तो विनीत ले ले फिर, तो बस लेके रख दिया है और कुछ नहीं किया इसका। चलो जल्दी चलते हैं। किसके पास जाना है भाई? ऊपर से नीचे भेज रहा है, वाह सही है भाई सही है। आई विल गो नाउ, सी या लेटर। ओके ब्रो, इससे मिलना है। Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yoon. Miss Yoon. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about Wonder Cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make Wonder Cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? Oi, I am back. No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. तुझे ना दो चार कैरेक्टर दिखाने पे रही। Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. Like कर दो guys, like कर दो। It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. कहाँ चली गई वही फेरी? क्या है यहाँ पे? ये मिलेगा कंप्लीट करने के बाद। ये क्या है? अच्छी बात है, ये भी करना है। देख रही है मिशंस, देख रही है तू? ये देख भाई भाई, ये क्वेस्ट भी खतरनाक है यार। हाँ, मैं तुझे क्या दिखा रहा था, कैरेक्टर दिखा रहा था। ये देख,
अभी जो हम बात करें ना, इसकी बात करें, निंगवान की, ये कैरेक्टर। और ये देखिए, ये रही मेरी ट्रैवलर, जिसका यूज़ नहीं करता हूँ मैं। ये है सुक्रोस, ये है क्यूकी, इसका नाम पता था पर मैं भूल गया। और ये काय है, ये एम्बर है, ये क्या है भाई, फिल्स चिल, क्या नाम है, ये भी। मतलब ये सब जो कैरेक्टर मैंने, ये सब जो कैरेक्टर ये यूज़ नहीं करता हूँ। ये कैरेक्टर ठीक है, इसको थोड़ा लेवल अप करना है, अच्छा सा वेपन देना है और इसके आर्टिफैक्ट्स देने हैं। और मैं तेरे को बोल रहा था ना, आर्टिफैक्ट्स जो तेरे पास एक एक दो दो लेवल के, देख ऐसे 5 लेवल के रहते हैं आर्टिफैक्ट्स। ये देख ना, मैं दिखाता हूँ ना मेरे, जैसे कि ये कैरेक्टर देख, ये कैरेक्टर के आर्टिफैक्ट देख, सारे 5 लेवल के हैं, देख रही है? ये देख, सबको दिए हुए हैं। ये आर्टिफैक्ट देने से ना इसके पावर बढ़ते हैं, समझ रही है? देख इसको, देख इसका जो ये फ्लावर है, ये फ्लावर इसको हेल्थ देते हैं, ठीक है? ये फ्लावर इसको हेल्थ देते हैं। लेवल कैसे बढ़ाए, बुक से ही बढ़ता है यार लेवल। तो मैंने तो मैक्स आउट है मेरे सारे, देख ये मैक्स है, ये भी मैक्स है, ये भी मैक्स है, ये मैक्स नहीं है, इसके लिए बुक्स चाहिए। 104 बुक, 160 है मेरे पास। कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो मेरे को वो वाला भी मिशन करना है। बहुत कुछ है भाई इसमें समझने जैसा, समझ रही बात को? तो फाइट नहीं हो रही, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा बिना फाइट के। I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The divine damsel of devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. ये कैरेक्टर मेरे पास है। Seems like you have a real connection with this place. लाइक कर दो गाइस, 30 लाइक के बहुत करीब है आप लोग, 30 लाइक्स कर दो जल्दी से। हाँ, इसको चालू। What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. वाओ, ये लाइन ही तो देखा, मतलब मस्त लाइन है, गर्ल बिकमिंग अ हीरो। Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, if you want to live, you must sacrifice a child to me. What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation.
When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. क्या बोली तू? वो बंदा क्या है? वो बड़ा, हाँ वो बड़ा वाला फॉक्स को जो ब्लू वाला है, हाँ वो तो पता है। ट्रायल में एक लड़का दिया था, उसी से मारी। थंबनेल चेंज नहीं किया। अरे थंबनेल चेंज करना था बट ना क्या ही बताऊँ मैं तुझे, फ़ोन में था ही नहीं कोई, थंबनेल मिल नहीं रहा था तो I really लगा like दिया। this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! भाई ये बहुत जल्दी खुश हो जाती है। यहाँ लड़ाई नहीं हो रही मेरी, उसकी वजह से दिक्कत है। हाँ तो मैं क्या कर रहा था, तुझे ये कैरेक्टर मिला होगा लड़ाई के बीच में। ये था क्या? नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये भी नहीं था। ये कैरेक्टर मिला ना तुझे वुल से फाइट करने टाइम? बोल कहाँ चली गई? क्या लिख रही है? टू फाइंड अ स्टार। ये वाला आयरन कहाँ से ढूंढूं मैं? इतने से सर्कल में मुझे वो आयरन ढूंढना है। यूज इससे मिलेगा? अरे ये नहीं क्लिक होना था, ये क्लिक इसी से मिलेगा ना। यहाँ कुछ चमक रहा है। ये तो बाहर का है। ये लोग क्यों लड़ रहे हैं यार? हटो। Right now, right here, right now. ये मर गया। Right here. कहाँ है आयरन? तुम कुछ भी दबा रहा हो आयरन ढूंढने की जगह पे। कुछ दिख रहा है अलग सा कुछ फेरी? मैं भी चली बट पीसी मैं भी चली बट पीसी से खेलना सो हार्ड। कहाँ चली? रुक भाई, नुबड़ी क्वेस्ट देख के जा, पीट दूंगा मैं तेरे को। ये रहा पक्का यही है। ओ भाई फाइनली मिला। एक और कहाँ पे होगा? इसी साइड। रुक जा यार, कहाँ जा रही है? मिशन देख ले भाई। ये मिशन देख के जाओ, ऊपर तो नहीं है?
आवाज आ रहा है कुछ weird सी यहाँ पे। ये रहा, देखा 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 कहाँ छुपा हुआ था। This should be enough star splinter iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhong said we should ask the locals for help. Why don't we try there? एक बार बताइयो, मतलब जो स्ट्रीम की क्वालिटी ना बस मतलब अच्छी आ रही है ना, दिख रहा ना अच्छे से। There really is someone here. वे फेरी। Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Subrosium, ये क्या है? मस्त। Is he trying to tell us to look for clues in the village? ठीक है यार। Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. मैं 180 पे देख रही, सही बात है। Shenhe. You're alive. The rumors You are alive. true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. And this place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. लेना तो Don't पड़ेगा ये worry. कैरेक्टर यार। Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. ओके, इस सड़क जाना है। क्या रिसर्च करना है यहाँ पे? कुछ नहीं है अंदर। चेस्ट। Go on. Open it up. Show me what's inside. ये रहा ना कुछ यहाँ पे पड़ा है। कुछ तो पड़ा था यहाँ पे। The remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. ठीक है। और कुछ ढूंढना है। इसके आसपास कुछ और भी होना चाहिए। ऊपर से दिखता है यार, कभी भी पता है। पक्का पेड़ के पास है कुछ तो। नहीं है। Records left behind in the village. In the village लिखा है पर सर्कल इतना सही है भाई। ये क्या स्कैम चल रहा है यार? मैं ये कहाँ फंस गया? वही थोड़ा दूर चलते हैं। कहाँ पे दिखा रहा है मार्क? यहाँ पे दिखा ना कुछ। ये रहा ना, अंदर पड़ा है। What's this? ये भाई इतने बड़े बड़े नोट्स दे रहे भाई। कुछ अच्छा बोल रहा है। Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age.
So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster by her own father. Oh, the truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh, it looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. We've looked everywhere, but still no mention of Subrosium. Let's have a look over there. अभी भी सर्च ही करना है भाई, कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, पता ही था। This is it. हे यार मत दो भाई, इतना नहीं So पढ़ेंगे। basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Subrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. चलो भाई नीचे चलते हैं। मस्त कैरेक्टर है यार। One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. Well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. Shenhe, look! This tells us how to find Subrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake! Let's go then. Let's go then. Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. It's okay. I like your version. But,
Huh? My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part of human society. So, I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhua! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! Let's go. We can't let someone else beat us to it! Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. किस साइड जाना है अब? फाइट उठ होना मजा आया यार। ये स्टोरी चल रही है पता, और इसकी स्टोरी सैड स्टोरी है। बात ये समझ रहे हो? मुझे तगड़ी फाइट करनी है। कुछ तो था यहाँ पे जो उठा नहीं पा रहा हूँ मैं। 70-30 को आना है। वाओ, ये करो बैठ के पहले। 70-30 कहाँ है? 23 कर देता हूँ ना, हो जाएगी। किसकी स्टोरी है? अरे उसकी है जो कैरेक्टर, क्या नाम उसका, क्या नाम है, स्नेहा कुछ ऐसा नाम से है ना, उसकी क्या है मतलब उसकी स्टोरी है वो, और सैड स्टोरी है। देखो टाइम चेंज करते स्टोरी मतलब प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। सनसेट हो रहा है, मस्त लग रहा है भाई। ग्राफिक्स तो मस्त है, और अल्ट्रा पे तो और खतरनाक दिखता है ये। ढूंढना क्या है? मुझे ये बेकार लगता है भाई, ढूंढने वाली चीज़ें थोड़ी अजीब सी नहीं लगती तेरे को? तेरे को तो मिली ही नहीं होगी। ये लेना है ना, उठा ले। That's everything we need. Let's head back and report in. ये कौन खड़ा है? Paimon's curious if Beto's made any progress. ये कौन है? बेचारा अकेला खड़ा है। देख, बेचारा कल ही ब्रेकअप हुआ है, पर लड़की को कैसे देख रहा है। देख, ये देखिए नीचे देखने लगा। ये देख, छोड़ यार, क्या ही मस्ती करूं मैं भी। Go, Barbara, go! Go, Barbara, go. Oh, goodness. So, are they okay? मतलब हम ना इसको चीज़ें ला के दे रहा है, ये मतलब हमारे लिए वेपन बना के देगा। समझ रही फेरी? वो जो स्टोन्स कलेक्ट किया ना हमने, उससे मतलब ये हथियार बना के देगा। This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business.
Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Ta-da. Oh? You got this then? Yes. देख, I have been किसकी training with story है? the देख, ये Adepti जो for दिखाई दे रही है, years. बीच में खड़ी है. I know a thing or two किसकी about story making चल रही है अभी? sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Maybe I'll learn something. देखो कुछ तो बन रहा है. Whew. The sigils are ready. Though they are in some Sigils respects inferior are to my ready. masters, I can assure you there will be no quality issues. I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Head of us. ओके, ये देख, ये 2 चीज़ें बना के दी है इसने. अब इसे कहीं और लेके जाना पड़ेगा. ये और असेंबल होगा. मतलब इस टाइप से चल रही है ये. अबे यार, हर बार यहीं जाना होता है और ये यहाँ क्यों भेज देते हैं हमें? जा, ये ले लो ना भाई, यही बेस्ट है. हाँ, ये क्या सीन हुआ अभी? और ऊपर जाना है. यहाँ से चढ़ पाऊंगा? जरूरत क्या है? इसको भी पता नहीं चला मैं कहाँ से आया हूँ. Ningguang's little secretary! We found all the materials! वो उसकी सेक्रेटरी भाई. Oh, निंगवांग already? की. All three of you found them together. Okay, I see. I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. Wee. Okay, Bayuen call. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? Beidou. It's over already? Yeah. I haven't even found the plustrate yet. I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first!
This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. ये रही निंगवान भाई. Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. भाई कहाँ The डाल दी? construction of the इतनी मेहनत से new लेके आए थे Jade हम. Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. भाई गलत बात है Now भाई. it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Yeah. Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. A traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your brother's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow. You're a mind reader, Ningguang. Oh well. Guess Paimon will ask a question then. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Wow. Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Oh, great! So next time we run out of Mora, we just need to come to Ningguang? No more questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Oh, a sense of belonging. Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou. It's your turn. Do you have a Beidou? question for Ningguang? क्या नाम है ये बिड़ू? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest.
Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millilith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. सौविक ब्रो क्या बोल रहे हैं? आईफोन नहीं ब्रो, आईफोन नहीं, OnePlus का फ़ोन है. और वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. आपका स्वागत है हमारी स्ट्रीम पे. और आईफोन तो नहीं है, And I hope that you can all witness it with me. I hope that you can. Let the Ascension ceremony commence! ओके, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ये नीचे से ब्लेड की तरह लग रहा है ये. जा कहाँ रहे हैं? ओके. Right on cue. The Avenger of the Vortex, Beisht. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming. Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone. हाँ ये तो इतनी अच्छी कैरेक्टर को 4 स्टार रखा है इन लोगों ने. निंगवान मतलब 5 स्टार कैरेक्टर होनी चाहिए थी. भाई और क्या ही सीन था भाई ये तो. You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others
is the day that you can truly become part of human society. Arthur looks better. Then Lumi. 2 सेकंड रुक जा, पढ़ता हूँ चैट अच्छे से. Okay. कायरो मॉमी. भाई बेस्ट कैरेक्टर है भाई, मिलती नहीं है ना. What are you doing here? Okay. I can't let you be the only one taking this risk. फाइट करनी है. I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. निकल जा. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help you. ये फर्स्ट टाइम ये कैरेक्टर मिला है, इसका मतलब यूजेस कैसे करने हैं यार. Manifest. इससे क्या होता है? आपका AR, मेरा AR अभी 50 है. सच में नो आइडिया, मतलब आइडिया ही नहीं है कैरेक्टर यूज कैसे करनी है, पावर कैसे यूज करने है. मैं गिर जाऊंगा भाई ऐसे तो. Right here. इतने बटन्स नहीं दबते हैं. Emerge. Right now. Right here. Ready, steady, go. अटैक बूस्ट देता है. ओके, एक सेकंड. प्ले बिग. I wonder when I'll be as tall as my big sister. क्या ये बिग थिंग मेक द डे ब्राइट? ये लिखना चाहते हो? हेलो 5, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो. मैं नहीं आया. Go, Barbara, go. अरे रुक जाओ यार. Right now. लड़ना कैसे? मैं तो मारी खा रहा हूँ. Think you can bully me? अरे रे. Obey. Right here. नहीं हो रहा कुछ तो. अरे उससे यूज करना है, पर कैसे यूज करना है ये नहीं पता मुझे. फर्स्ट टाइम मिली है कैरेक्टर, मुझे नहीं पता कैसे यूज करनी है. अरे पिट गई यार ये तो. Trial has higher damage than team. Unleash. 16,000 damage. The buttons led to the break. Cryo incarnate. Obey. Yes. मतलब यही कैरेक्टर यूज करनी है ना, मैं सकता हूँ. Manifest. Unleash. Come on, we can do it.
अरे यार पास तो आओ, लड़ू के समय। Obey! Unleash! चला कहाँ जाता है कैरेक्टर बाहर। मत पीटो भाई, मत पीटो। तुम मूव की तरह खेल रहा हूँ मैं। आता ही नहीं है। By ordinance divine. अब ब्रो एबेस खत्म हुआ। हाँ शायद खत्म हो गया है। लास्ट स्ट्रीम में वो लास्ट स्ट्रीम में मेरा क्या राइगन शोगन को मारना रह गया था। उसके बाद मैंने डायरेक्ट ये मिशन स्टार्ट कर दिया। Manifest! ये लेवल अप वाली बात कर रहे हो क्या? It is not mission. लेवल अप वाला ना? जिससे रैंक अप होती है। जैसे मेरी 50 अटकी हुई है, उसके आगे अगर मुझको करना हो तो मेरे को एपिस को जाके मारना पड़ेगा। नो नो, कौन सी मिशन है वो? Obey! Manifest! ठीक है भाई, मैं तो फिर जी रहा हूँ। ऑलमोस्ट मर गया वो, ऑलमोस्ट। एक सेकंड, ये चैलेंज के बाद देखता हूँ मैं कौन सी मिशन की बात कर रहा हूँ। कि ये मर गया नाइस। Shouldn't we go after her? This place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. भाई यहाँ से 2 सेकंड हो जा भाई, जल्दी लोड हो जा। I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. मैंने लास्ट मिशन ये किया था निगवान का जो Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millelith, thank you for your service. Great. Then next time I watch Miss Yun's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe.
That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But there will no doubt be further trials to come in the future. Do not suppose that one will not continue observing you hereafter. While the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. One shall be going homeward now. Please, have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. शेंघाई जगह का नाम था शायद से तो ओके हाँ कौन सी मिशन की बात कर रहे थे यहाँ पे था कुछ ये ना इसकी बात कर रहे थे यस 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 मेरा कितने फ्लोर हो गया वहाँ पे देखना पड़ेगा नहीं 2 महीने पहले किया तो 2 महीने के बाद खेल रहा हूँ बीच बीच में खेल रहा था पर इतना नहीं सिर्फ डेली में हो गया ऑलमोस्ट एक और 2 7 तक कंप्लीट है मेरा मिशंस कहाँ है ये शॉर्टकट पड़ेगा नाइस वन थैंक यू मेरी हेल्प करने वाले मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका 60 AR है उन लोगों ने मेरे को मतलब ये देखो ये सारे आर्टिफैक्ट्स वेपन ये सब उन्होंने ही बताया है उधर डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर लो डायरेक्ट होता है ये नया था नहीं पता था मुझे थैंक यू अरे यार जॉयस्टिक काम कर Looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Okay. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Wow. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one.
टी कप रख के I अल्कोहल trust you will दिया find the जाए। marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying बॉटल indulgence. वोटल होनी चाहिए ना। Have you टी heard? कप में थोड़े होगा Miss Yun's alcohol। going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Hey, look! Miss Yun is going on stage! कौन जा रही है स्टेज पे? ये स्किप हो गया क्या? नहीं 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 नहीं। Chinese vibes. 北京国大见人皆明丧。翻越茫茫千源头，天伦三曲将扶摇。朱丝复决兰柯桥，须弥红旗飘。可贵不见杏花苗，朱丝望结魂翻飘。荧光红尘渺渺烟消。神女劈冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听，知道未必人不识，自有知音多情词。功名烈烈见流星，只知不酬心。爱情。彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。रियल बेस्ड What did you क्या हो think? रहा है ये Personally, I thought I sang rather well. It was रियल बेस्ड वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रो। आपका स्वागत है हमारी स्ट्रीम पे। ये चाइनीज में क्यों है मुझे भी तो नहीं पता है। Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the Divine Damsel of Devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. इसने चाइनीज में गाना गाया इसलिए। I think I found the opportunity I needed to change. Ms. Yun. Ching chong ching ching कर रहे थे। Here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, Finally that's it, like an पूरा adeptus. English। Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. अगर Well, हिंदी this में was ऐड definitely करा worth हो showing up for. तो अच्छा होता। Let me pull up a chair. All right. We'll all have a friendly chat. Get ये better बात भी सही है। acquainted. बनाना चाहिए इनको हिंदी में एक। Alternatively, you could leave us alone. That is,
if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. हिंदी में तो मज़ा भी आता, मतलब हिंदी में गाने, इनके नाम, स्टोरी भी समझ में आती है और अच्छे से हिंदी में. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. हो भाई, क्वेस्ट कंप्लीट हो गया भाई फाइनली. फिर भी क्या बाकी रह गया है? ना भाई ना, मैं नहीं कर रहा. जाके बात करो. मुझे राइकन शोगन वाला मिशन करना है. वो वाला मिशन है कहाँ पे? ये वाला शायद से. हाँ ये वाला है. यही ना वो. हाँ स्ट्रीम रुक गई है. नहीं नहीं रुकी है. ये पीसी में ग्लिच आया कुछ तो. ग्लिच नहीं हुआ ना? कोई है तो बताओ यार चैट में. स्ट्रीम में को बर्फ मतलब क्या बफर होते हुए दिख रही है. फिर से हो रही है. चल रहा है. चलो शायद से यही मिशन है ये राइगन शोगन वाली. देखिए कि फिर ये देखिए ये एक नई जगह है. ये देखिए कितनी मस्त जगह है. Rain. If only it could यहाँ पे cleanse the बिजली गिरती corrupt रहती है. soul इस साइड जाना. चलो. of this world. नहीं हुई. अरे मुझे लगा मैं बर्फ मतलब क्या बफर दिखाई दे रहा था होते हुए. ये मतलब ये आइलैंड पे ना हमेशा बारिश होती रहती है. ये देख, ये फेस देख रही है. ओ भाई खतरनाक मैप है. लाइक कितने हो गए फिर ही बताइए जरा. याद आया भाई. यहीं पे ना मैंने एक चेम्बर में गया था. ये रहा. क्या बोलती है, जाना चाहिए मुझे? स्कैरी है वो तो है ही. क्या बोलती है यार, जाओ या ना जाओ या अगले स्ट्रीम में, क्योंकि ये अलग मिशन है. ये अलग मिशन है. ये आज करनी है नहीं करनी है. 200 और मिल गए. मैं तो बोलता आज ये वाली मिशन आज नहीं करते हैं. ये मिशन थोड़ा खतरनाक है जो नेक्स्ट स्ट्रीम में करेंगे. मुझे पता याद आया थोड़ा अलग अलग अगले में जाना. ये भी एक है. एक्स्ट्रोलॉजी एंड द 50 ईयर पाथ. देखिए कितने सारे मिशन है. ये भी कर सकते हैं. इसमें ये भी है. कोई अच्छा वाला करेंगे. यही करेंगे मतलब नेक्स्ट टाइम. आप देख लो. हम तो देख ही लेंगे. देखिए एक और ये एक नई जगह है. मतलब अच्छी जगह है. ये सब दिखा देता हूँ मैं तुझे.
ये देखिए इसका टेक्सचर वो सब देख क्या ही खतरनाक दिख रहा है। देख रही प्लेस को? और भी प्लेसेस दिखाता हूँ तुझे, रुक। ये देख, यहाँ वाली देख, ये ग्रीन ज्यादा है इधर वाली। ये देख, ये ले लो भाई, काम आएगी। और यहाँ पे मॉन्स्टर भी देखना कितने प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से मॉन्स्टर होते हैं। Emerge. पता है, हर प्लेस का ना अलग अलग थीम सॉन्ग होता है इस गेम में। जैसे ये प्लेस आती थी कि ये वाले गाने बजने लगे। पहले नहीं मारना था। Right now. Shake it and stir. There it is. Emerge. Right now. Nothing lasts forever. जहाँ मीक रहती है वो कौन सा प्लेस है? रुक दिखाता हूँ। अरे जहाँ गया था पिछले बार, जहाँ पे बहुत सारी बारिश हो रही थी ना, वो वाली प्लेस पे रहती है वो। देखो नेक्स्ट टाइम उसका ही मिशन करेंगे हम लोग। उसकी मदद से राइडन, क्या है उसका नाम, राइडन शोगन को मारेंगे। अरे रुक जा भाई। Right here, right? Look at you, Boozel. I suppose एक this will चेस्ट do. इतना लड़ना पड़ा। ठीक है भाई। वो प्लेस ऊपर हो जा। वो प्लेस यही है, नीचे साइड। कार्तिक आ गया। ओए तू फूक के आ गया। देख इस जगह पे भी जाना है। देखिए ये भी एक जगह है, मतलब ये नीचे साइड में है, उसकी जगह है। कल मारोगे राइडर शोगन को? हाँ भाई कल ही मारूंगा। देख इसी साइड रहती है वो। देख ये फ्लावर चाहिए थे तुझे, याद है? इस कैरेक्टर के लिए। देख कौन सी कैरेक्टर है, देख ये कैरेक्टर याद है? इस कैरेक्टर का लेवल अप करने के लिए ये फ्लावर चाहिए होता है, और ये फ्लावर यहाँ मिलता है। तब भाई आ गया। अरे तू नहीं था तो देख कितना कुछ मिस कर दिया तूने। देख चैट देख, लाइक देख। क्या बेबी, तुमको यहाँ होना होती, तुम तो भाग ही जाती। टर्निप के नशे खत्म हुए कि नहीं? नहीं हुए यार, नहीं हुए। पता नहीं इसको क्या हो गया है। यहीं पे उसका मिशन मिलेगा रे, मिको का। कोकाशी कुछ ऐसा नाम से। ये रहा ना उसका मिशन। ये देखिए ये उसका ही मिशन है। यहाँ पे हमको ट्रेनिंग दिया जाएगा, और वो ट्रेनिंग करने के बाद हम उसको मार सकते हैं। स्ट्रीम तो मस्त लग रही भाई, क्वालिटी। Rain, if only you could cleanse the corrupt souls of this world. क्या लिखा ना भाई, मैं तो
You should really bring the Knights of Favonius with you next time. एक ये वाला आइलैंड है, इसमें आइलैंड की भरमार है भाई, भरमार। फेरी का पता अभी ये मिशन चल रहा है आइस वाला। यहाँ पे मैं कितने दिनों बाद आया हूँ, है कि नहीं फेरी? मैंने किया या नहीं किया ये वाला मिशन? नहीं किया, देख देख मैंने भी नहीं किया है, देख। पर मेरे ये हो चुके हैं, ठीक है। अरे ये वापस वापस चैट क्यों आ रहा है? हेलो, ये क्या दिक्कत हो रही है? ये देख, ये सब मैंने कर रखा है। लॉल, अरे कर रखा है वही। तेरा देख एक ही साइड का जल रहा है ना, मेरा देख ये 3 जल रहे हैं। मेरा ये हो चुका है, इसके बाद क्या करना मुझे पता नहीं। यहाँ का मिशन भी नहीं है कुछ, ये चालू कैसे होता है मुझे नहीं पता। यहाँ पे ना एक बड़ा सा गेंडा रहता है, देखेगी तू? तुझे उसको मतलब चल, तुझे उसको लेके चलता हूँ मारने को, मज़ा आएगा। एक गेंडा रहता है यहाँ पे, ये रहा देख। यहाँ पे मैंने खाने का बनाया ना, यहाँ पे बड़ा सा सांड रहता है जो अपने 2 वापस चैट नहीं आ रहा, मैंने लिखा है ऐसा है। अरे कुछ बैड वर्ड्स हो गए तो नहीं आएंगे भाई। ये तो गुफा के अंदर आ गया भाई। देख ये गुफा में भी एक्सप्लोर करना है तुझे फेरी फ्यूचर में। ये देखिए ये सारी गुफा, ये विनीति करवा सकता है, मेरे से नहीं होने वाला ये, ठीक है। Guess we can rest a bit. डेली मिशन आया तेरे को ये वाले है कुछ भी भाई। अभी ये लड़ेंगे यार आके मुझसे, रुक जा भाई। छोड़ छोड़, स्किप 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 स्किप, ये भी स्किप। ये यहाँ पे चेस्ट है, अभी भी हम तुमको जरूर मारेगी। भाई लग गए, भाई लग गए, जम गया मैं। भाई मेरी कैरेक्टर मरने वाली है, भाग। दूर हो जा साले, मेरे तो लग गया यार। देख Come on, we can do it. आइस वाली जगह ना सबसे बेकार है। अरे मरो भाई तुम लोग भी, आगे मंत्र पढ़ रहे हो नल्लों की तरह, भागो यहाँ से। यहाँ पे नहीं फ्रीजिंग नहीं लगता ना तो अच्छा रहता, पता है। तो इतनी जल्दी फ्रीजिंग लग जाती है ना, बहुत बेकार लगता है। आया था बंदर जैसा शक्ल का एक मोटा सा सांड था यही लोकेशन में। ले भाई कहाँ, क्या बोल रहे हैं? ले ली भाई का कह के ले ली। साले एक तो आइस लग रही है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है भाई। ये आइस नहीं लगता ना तो पीट देता मैं उसको। तो ये मोटी की तो ऐसी 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 ले लेता मैं, ऐसी। जान रे यार मोटे, शर्म कर ले थोड़ा। मतलब जुगाड़ करना पड़ेगा। वो आग का जुगाड़ कहाँ से करूँ मैं? तू गर्मी देता है, तू गर्मी देता है, तू गर्मी देता है। नहीं भाई ये गर्मी नहीं देते ही भाई। फिर मैं नहीं लड़ रहा भाई, सॉरी भाई। ऐसे तो 2 मिनट में मेरे कैरेक्टर मर जाएंगे सारे। ले भाई लग गया।
भाई उठा उठा कर लेते लेते ले ली साढ़े। वहाँ पे लाइट नहीं है भाई, कैसे पीटू? एक तो ये स्ट्रोम आया हुआ है, मैं नहीं जा रहा। नहीं चाहिए भाई मेरे को चेस्ट, उससे अच्छा मैं कहाँ जाऊँगा पता है? मुझे इस साइड जाना है, इस साइड जाने वाली जगह कहाँ है? छोड़ भाई छोड़, घर चलो भाई, घर वापसी करते हैं हम अपनी। चलो घर वापसी कर ली भाई। तो आज के लिए बस इतना ही रखे भाई, 6:30 हो गए, तो 5 मिनट रुक जाते, फिर 2 घंटे की स्ट्रीम कंप्लीट हो जाएगी। तब तक कुछ चीज़ें बनाते हैं, काम की चीज़ें। क्या बनाए कुछ काम की नहीं, छोड़ो। इधर कुछ तो आया नया, ये भी कुछ काम की नहीं है। रिवॉर्ड क्लेम कर लो। कौन सा रे? कौन सा रिवॉर्ड जा रहा है? हमें नहीं आया यार कोई रिवॉर्ड, हम गरीब लोग हैं भाई। पता नहीं कहाँ कहाँ से डाल दी भाई, ढाप ढाप के भाई। बोल तो रही है, बना रही है भाई ये लड़की, पता नहीं कहाँ से ढाप रही है। वही बता रहे कहाँ से ढाप रही है। लड़ो भाई, दोनों लड़ो। Ad Astra Abyssosk. Thank you for complete. Ad Astra. सब माइनिंग पे गए हैं। अबे मैंने खुद की है, लाइट मोशन से ढाप तो रही है भाई। कहाँ से ढाप रही है भाई? थोड़े पंछी मार लिया जाए। मारूंगा किसे इससे ना। ओके, एक गई, वहाँ पे ढेर सारे। अरे जमीन पे लग रहे यार। चलो भाई मरी। क्या बोल रही है सुगर कहीं का? बाप रे कार्तिक, क्या बोल दिया भाई? मैंने सुनता कार्तिक। भाई कार्तिक, खाना बनाते खाना। अरे बात नहीं करना, हमें खाना बनाना है। गुड बाय। गेंशी की कल होगी। हाँ, टर्निप काम नहीं किया तो गेंशी खेलनी पड़ेगी ना, क्योंकि बाकी जो गेम खेलते हैं अपन वो टर्निप। ये सब क्या रेसिपी? लन क्या बनाए? मोमोज बनाते आज कि जूस? बताओ क्या बनाए इसमें से? क्या खाना पसंद करोगे? पिज़्ज़ा भी है, लेमन जूस भी है, ये क्या है? फ्रूटी कुछ तो कुछ है भाई। तुम बताओ भाई कौन सा, मतलब कौन सा डिश खाना चाहोगे? जल्दी बताओ। सूप भी है, मोमोज। तेरा होगा। कार्तिक तू बता, तू क्या खाएगा? बता भाई जल्दी बता, क्या खाएगा? अरे बता दे यार बुद्धू। मोमोज खा के तो किसी की तो तबीयत खराब हो गई है। अरे सुट्टा पिएगा ये भाई। खाने की बात करो यार, कोई अच्छी। क्या खाओगे ये बताओ यार। ये क्रैब नूडल्स खाएगा या ये मशरूम, क्या ये कुछ भी है पता नहीं। जूस पी ले भाई, तू जूस पी ले, मैं तू जूस पिला सकता हूँ। देख मस्त सा जूस है, फेरी जानती है।
जानती है ये सब बवासीर नहीं खाते। ये सब बवासीर नहीं खाते थे, ये खाते। ये कहाँ गए मोमोज? ये देख अंडा कड़ी भी यहाँ पे, अंडा कड़ी। ये देख चिकन भी है, ये देख नूडल्स भी है। मोमोज नहीं बना रखे मैंने, पिज़्ज़ा भी बना रखा है। ये रहे ना मोमोज, ये ले भाई मोमोज पड़े हैं। दाल चावल है तो बोलो, दाल चावल भी तो होगा, राइस राइस है इस गेम में। ये रही ना, ये क्या है? आटा, आटे से बन रहा है भाई। Never go adventuring on an empty stomach. क्या है, मेरे सर्वर में जल गया था मोमोज। बनाना आना चाहिए, बनाना। हाँ, लाइक कर दो गाइस, जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं हम कल की स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बंद कैसे करते थे इसको? इसको कैसे बंद करते थे, याद करने दे मुझे। हाँ याद आया। चलो गाइस, मिलते हैं अगले स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।